हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेबनिया और मेरे साथ हैं अंगद, जो कि इन दिनों मेरे हिसाब से इतना खूबसूरत रोल प्ले करके आ रहे हैं जिसे देखकर एटलीस्ट मुझे याद आ गया वो जमाना जब बॉलीवुड माफिया और अंडरवर्ल्ड सब एक साथ में परेशानी का सबब बनते जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया आपने भास्कर शेट्टी का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट वाज रियली गुड। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। सो आई होप यू आर सेफ। आप जहां पर हैं आप और आपका परिवार सब कुछ सेफ है। जी बिल्कुल, आई एम विद माय पेरेंट्स राइट नाउ दिवाली के लिए। माय वाइफ एंड बेबी मेहर, वी केम टू दिल्ली। यहाँ पर हालांकि नंबर ऑफ कोविड केसेस हद से ज्यादा हैं, बट 9 महीने हो गए थे जी फॉर माय daughter who was growing up also. She is turning 2 tomorrow. So I really wanted her to be with both sides of the grandparents. तो मैं दिल्ली आ गया। अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर पर हूँ and it's a lovely feeling to be home. Also it's a lovely feeling to finish a show during lockdown called Mumbai. उसका ट्रेलर लोगों को बड़ा पसंद आया। अब शो बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को। I'm really grateful because I feel blessed that 2020 has been quite a tough year for everyone. इस साल में मेरी 2 रिलीजेस हुई हैं, गुंजन सक्सेना ऑन नेटफ्लिक्स और मुंबई ऑन ऑल बालाजी एंड Z5, और दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और अपने लेवल पर बहुत अच्छा किया है विद ऑडियंस. सो I feel that in a tough year to have 2 releases and also both of them doing very well and getting the love from the audience means a lot. So मुझे पता है कि समय हर कोई घर पे है और इज बीइंग बहुत हर कोई बहुत ही सावधान रहना चाहता है, लेकिन हमको काम करना पड़ेगा, हमको इस रट में से निकलना पड़ेगा. एंड आई फील दैट we can't be thinking about what is going to happen. I think we need to at some level get with each other, back each other and get back to work, because it's a moral responsibility that we have as not just actors but also earning members towards the government, towards the people who are working with you as a team. So I think agar economy ko upar badhana hai to hame kaam par jana padega, and I'm really grateful because मुश्किल था लॉकडाउन में शूट करना, लेकिन my producer wanted us to shoot and I wanted to shoot and we trusted each other, we trusted the process. सोशल डिस्टेंसिंग कितना भी हम मेंटेन कर पाए, जो कि हमने किया, लेकिन हमने शो खड़ा कर दिया है. फॉर अस इट्स अ बिग अचीवमेंट और रिलीज पर भी लिया है. बिल्कुल, दैट्स रियली नाइस. एट द सेम टाइम लॉकडाउन में लाइक मैं सीरियसली, मुझे जब भी मैंने पूरा देखा मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कहीं लॉकडाउन ने आपको रोक दिया हो काम करने से या परफॉर्म करने से. तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा था और उसके बावजूद भी वो जो एक एक्शन रिएक्शन वाला होता है वो चीज कैसे कट करके काम किया? टफ तो गया होगा ये सब क्रिएट करना. देखिए मुश्किल बहुत था, लेकिन एट सम लेवल यू हैव टू फॉरगेट अबाउट कि आपके आसपास क्या एनवायरनमेंट है. यू हैव टू एज अ परफॉर्मर, आपका काम है टू परफॉर्म टू द ऑप्टिमम लेवल and make sure that you are honest in your performance and towards your character. And I feel that that's what we did at some level. We switched our minds off corona. It's tough to do, but you had to do it, and we were all tested. And I feel that it was important for us to believe in each other, and we tested negative as a crew, and our production was really helpful in that. And I was testing after every 4 days because also I was going back home to my wife and my child, so I was staying away from them, but I was still going home. But then I took it upon myself. I said either I'll become scared, और लोगों को तो अभी घर बैठे बैठे भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, या मैं काम पर जाऊं. और मुझे काम पर जाना था because I feel that our country thrives on 2 things. One is sport, which is cricket, and the other is cinema. And if I'm part of some between the two, then I feel that I want to be that performer who gets out of his house and goes to work, because हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, 99% of the industry is behind the camera. स्पॉट बॉय हैं, लाइट बॉयज हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, डीओपी वाले हैं, डायरेक्शन टीम है. कोई 80-100 जन की रोज की तनख्वाह लगती है अगर एज एन एक्टर आप सेट पर जाते हो. So I feel very morally I was responsible to my set and the people who are working with us as a crew. क्योंकि अगर मैं नहीं जाता था because being the protagonist, तो फिर वो घरों में चूल्हा नहीं जलता था. So I feel that I'm very happy that could be possible and we could
you know, शो खड़ा करना एक बात है, शो को रिलीज करना एक बात है, और you know, शो का चलना एक बात है. So I feel that because our energies were so good with each other, you know, that's why we have a lovely response and an IMDb rating of 9.2. So you know, I feel very blessed because eventually, you know, hard work does pay, and we all have now we all are feeling really happy and glad and relieved because ये शो अगले साल चले जाता, शायद वो बात ना होती, शायद ये बनता नहीं, you know, बड़ी सारी चीजें हो सकती थी. So I'm glad we did it. तरीके का रोल आपका था, मेरे हिसाब से आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और मैनरिज्म भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी थे जितने कि स्ट्रॉन्ग आपके डायलॉग्स हो सकते थे. डायलॉग्स शायद आपको लिखकर मिल रहे हैं, लेकिन बाकी का काम एक एक्टर का होता है. किसी को देखा, किसी को वॉच किया, फिल्में देखी, कैसे प्रिपेयर किया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. लाइक आई फील दैट मैं जैसे आई टेल यू हाउ माय प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज. मैं किसी का काम मैं काम बहुत लोगों का देखता हूँ फॉर द वर्क दे डू, बट आई व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट देन आई डोंट लाइक टू सी एनी रेफरेंस पॉइंट. मुझे रेफरेंस पॉइंट ना मुझे खटकता है, बिकॉज आई फील वो रेफरेंस पॉइंट में अगर आदमी देखे ना तो फिर वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ढल के फिर वो वैसे ही परफॉर्मेंस जाने जाती है. यू ट्राई टू समहाउ यू नो यू ट्राई टू not unknowingly you try to copy that because वो human एक behavior होता है, it's a human pattern. So in all the work that I've done, whether it is from Pink as Rajveer Singh to Inside Edge as Arvind Vashish to Surma as Bikramjeet Singh, or you know, for that matter Verdict, or now Mumbai, I don't like reference points. You got to I make my own reference point. I do a lot of homework. So I think that is very vital to me as an artist, because I feel that my responsibility to the audience that is watching my work should be that, you know, we know Angad as a person, but we are now getting to know Bhaskar or Arvind or Kal Khandalawala as a human being. For me, that is very important. They should connect with those characters, you know. So I try and work towards a reference point of making the character more humane, to make it vulnerable, to make the fact that if he has flaws, why does he have flaws? You know, I work towards the fact that कोई आदमी अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता, उसकी संगत या उसकी आदतें उसको वैसा बनाती हैं. You know, it's like आदमी कहते हैं बहुत like, you know, वो बड़ा अच्छा आदमी है, आपको कैसे पता चलेगा वो अच्छा आदमी जब तक आप उसको एक सिचुएशन में नहीं डालोगे. You know, so it's all those things. So I do a lot of research and also work ki if I played a certain character in the past a certain way, ये जो character है वैसा play ना हो. You know, I work towards that dynamic. So with Bhaskar I did that. Like I'm glad that Akshay Chaubey जो हमारे निर्देशक हैं, he put his foot down. He said, and I was very skeptical. I said कि यार अक्षय कैसे करेंगे, साउथ का मत दिखा इसको. He said नहीं, साउथ का ही मुझे दिखाना है, because these are based on these are real life incidences and they are based on reality. I can't not show him from South. I said, but do you realize I'm a North Indian and I have a very strong North Indian background? You know? Agree. He said, yes, I know. मजा तो तब है जब लोग believe करेंगे कि तू भास्कर है who is from the Konkan region. So show it to me that you can speak that language and with that accent, you know, and not overplay it. So मैंने कहा देख, अगर that means I have to be speaking this language from childhood or with that accent. He said, yeah. So I can't. अभी साउथ में या कोई भी आप accent पकड़ने जाओ, कहीं ना कहीं आप overplay कर देते हो, you know, क्योंकि you don't think like that. But luckily इतनी मेहनत करी, इतने videos बनाए, हमें 1 महीना मिला था prep करने के लिए before we started shooting. So मैं वैसे बोलने लगा, मैं अपने videos बनाने लगा, मैं देखने लगा कि अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो कहाँ वो फेक लग रहा है या कितना ओवर द टॉप लग रहा है, इसको नेचुरल कैसे करना है, अपने बीइंग में कैसे बनाना है, बैठाना है. सो आई थिंक, यू नो, वी वर्क टुवर्ड्स दैट. एंड सिकंदर एंड आई यूज्ड टू कन्वर्स ऑलमोस्ट every single day basis on phone calls. We used to talk like our characters, you know. And Bhaskar is a very he's not a bhai. How he becomes the Mumbai guy is the journey of this character. So he's not he's not that guy ki he'll talk in a certain way. He's a vulnerable character who's very comfortable in the way he talks in whichever tonality. He's not that guy कि मेरे को loud बात करनी है तो मेरा impact आएगा, या मेरे को गाली निकालनी है तो मेरा impact आएगा. So we kept him in a very real space. I feel that
when you do a story of an underdog, you don't need to make him heroic. His deeds and what he does make him heroic, you know. So yes, ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया, उसमें काफी फ्लैम्बॉयंस है, heroic shots है, वो अच्छी बात है, which appeal to the masses also. But the character is a journey. It's how he is vulnerable, he's innocent, he's naive, he's a bit stupid, he's a bit silly, he's a bit childlike. थोड़ा वैसा भी है कि he's enamored by the glitz and glamour of Mumbai, he's enamored by the film industry, he's enamored that yaar, I want to move in the bigger circles, I come from this small background, but if I rise in my ranks and become the number one encounter specialist, then क्या पता शायद मेरे ऊपर फिल्म बन जाए. He's got those things. फिर उसको, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा, उसको अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाने का शौक है, तो वो उस जर्नलिस्ट से पूछा भी कैसा खड़ा हूँ, तू बता पोज कैसा लग रहा है, so he's got those dynamics. So I think that is. I have interviewed Dayan Naik, so I know what you're talking about. I loved your character because I know Dayan also. नहीं, वो तो means I don't know. I've never. I didn't have that reference point, and neither did I meet. I don't think that we moved in that direction. No. We moved in a direction of keeping it very, very real, keeping it very, very, very vulnerable and appealing to. अगर इंसान देखेगा इसको तो कहेगा यार इसमें कोई फसाड नहीं है. He is the way he is, So I think that is what is maybe working as Bhaskar, and that is what people also are now liking. That's true. अच्छा, जब आप घर पर ऐसे या फोन पर ऐसे बात कर रहे हैं, तो आपकी बेटी ने कुछ रिएक्ट किया? मतलब वो 2 साल का बच्चा कुछ रिएक्ट कर पाया, या घर वालों ने बोला कि नहीं तुम्हारी भाषा बिगड़ गई है, कैसे बात कर रहे हो? नहीं, मैंने मूंछ रखी हुई थी, so then my daughter was very startled once to see me in a mooch, and then I had to explain it to her कि ये मूंछ होती है, ये ऐसे है. Then she would say Papa moochi, all of a sudden. Then I was also playing, like show में मेरा, like they show me when I'm working in the UDP, I'm clean shaven, and then I become a police officer, I'm clean shaven, I train, I'm clean shaven. तो वो सब zones compared to when he becomes an officer and counter specialist बहुत अलग है. So back or forth, past or present काफी है show में. So I had to have 2 looks all the time. I'm glad that we kept the mooch, because one, I wanted to keep it. I've never been presented like that, and second, वो 2 tier 3 tier में मूछ का ना वर्ड अलग होता है. So people enjoy seeing people in the mustache. So I think that connect worked really. That's really nice. At the same time, इस पूरे सफर में आपने क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो सीखा है, या ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगा कि हाँ ये मैं अपने लाइफ की ग्रे जोन में रखना चाहता था, बट एक्चुअली दिस इज अ गुड थिंग? You take away something from any character. This is what I feel. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देखिए, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी when I was reading and then I was performing, that he is it really helps when you have, when a lot of people in reality have a certain आप सिक्योरिटी कवच उसको बोल लीजिए, या एक सोशल फेस होता है, एक पर्सनल फेस होता है, बहुत लोगों का होता है. I feel इस कैरेक्टर का नहीं है. He is the way he is. एक सीन है, वो इम्प्रोवाइज किया था. I was so into the character, और मुझे अच्छा लगा कि वो आ गया वैसा. There were no lines. वो एक सीन है where he's at a film premiere, and then he's talking about this girl getting launched, and he tells the producer कि तुम इधर आओ. And then he talks to him. He's like, अच्छा है तुम्हारा ट्रेलर, अच्छा है. वो पोस्टर में भी वो लड़की का नाम बड़ा हीरो से भी बड़ा रखा. So he liked that because he liked the girl. He wanted the girl positioning to be more than the guys. And the hero was a big time hero. So I think those dynamics, work really well. And I feel that when a character has no facade, he becomes very vulnerable, and then he's adorable. And then he can make any mistake, you're still with him. As a character, you're still with him. It's like, I feel an example I would like to give is Pankaj Tripathi. Like, I worked with him in Gunjan Saxena. And when I see him as Kaleem Bhaiya in Mirzapur, it's like, he can do anything, but I'm with him. He can as a character, get somebody killed, I'm with him. Even if he's wrong, I'm with him. So I think the idea is to not have a facade. The minute you break it, that wall, audience is with you.
तो फिर आप That's कुछ really, भी करोगे, अच्छा बुरा गलत सही, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन ऑडियंस आपसे जुड़ी रहेगी। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। चलिए आगे आने वाले दिन में अभी कुछ कर रहे हैं, अभी अभी ब्रेक ले रहे हैं, घर वालों के साथ है, दिल्ली एंजॉय कर रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल एक प्रोजेक्ट मेरा दिसंबर में शुरू होने वाला था। हम लंदन जाने वाले थे फिल्म के लिए, लेकिन लंदन यूके लॉकडाउन में है, यूरोप लॉकडाउन में है। आई थिंक बाय द 5th or 10th December I'll know what how we are going to go about it. लेकिन फिलहाल right now I'm just busy reading the lovely comments people are writing on Bhaskar Shetty or my character for me and for the show. And you know I would like to, how do I say it, like you know this show means a lot to me, and not just to me, it means a lot to Sikandar, it means a lot to Sandeepa, it means a lot to Vishwas, it means a lot to Madhurima, to you know Samir Dharmadikari sir, to for that matter to Akshay Chaube, to Apurva, to his writers who are Chintan Shah, Raj Vasant, Chintan Gandhi, to our producer Ekta Kapoor, all Balaji. I feel that you know we all struggled a lot during the pandemic, and we all struggled a lot during shoot, and we all like just wanted, like we were all ऐसा you know एक अच्छी बात क्या थी, हम लोगों को पता था कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमें कमियां भी हैं, हमें बुराइयां भी हैं, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, you know. And I feel that that has brought, like it brings in a certain honesty to everybody's energy in putting their best foot forward. Even the DOPs, Jay Bhansali, you know, he's done such a nice job of lighting up. Bawa, you know, he's also the DOP. They've done really well in you know putting it all together, and I feel that uh, I do get credit for it, but they are all behind the camera. All these people, like my own team, whether it was who were managing me or my makeup artist Shashank or my spot boy Hassan and my manager Divija, they all like sacrifice, right? Like they came on set, they left their families. अगर मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ या 24 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो भी काम करते। एक बार उन्होंने नहीं बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे या कोरोना है, हमारे घर पे भी माँ बाप हैं, but they came, you know, they stood by me, and I feel that is what is important. And it is like this teamwork, if the fruits are bearing and they are sweet and Mumbai people are liking, is not for anything, it is the energy that has been put forward by everybody on this show. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। चलिए चाहेंगे ये शो बहुत सारे लोगों को और भी ज्यादा पसंद आए, लोग बार बार देखें और आपको हम बहुत बार देखते रहे आने वाले दिनों में। Thank you शुक्रिया, so much. शुक्रिया। Take care. Bye. ठीक है, ठीक।